डियर फ्रेंड्स, बात चल रही है 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के पहले लेसन की, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, और उसमें भी बात चल रही है उसमें से 13वें लेक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं उनके सॉल्यूशन। 12 क्वेश्चंस इन ऑल। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The first question says, if the wheel has mass 70 kg and radius of gyration is 1 meter, if the wheel has mass, काफी सारे न्यूमेरिकल है, wheel has mass 70 kg, if the wheel has mass 70 kg and radius of gyration is 1 meter, k is equal to 1 meter, and the torque which is required for an angular acceleration of torque which is required for an angular acceleration of 2 revolutions per second square is how much? So torque is equal to, पहले I निकाल लेते, I is equal to mk square. How much is m? 70 into 1 square, that is 70. So ये आ गया मेरा I. मुझे क्या ढूंढना है? I want to find out the torque. What I want to find out is the torque. Okay, फिर कैसे ढूंढेंगे torque? तो 2 revolutions per second square आ रहा है। अल्फा के यूनिट्स बच्चों रेडियन पर सेकेंड होते हैं। एक रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 रेवोल्यूशंस यानी कितना? एक रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई इन रैड्स पर सेक स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ गया 4 पाई रैड्स पर सेक स्क्वायर। गूगली है ये। अल्फा की वैल्यू उन्होंने रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में दे रखी है, और ये जो अल्फा की वैल्यू है उसको हमको रैड्स पर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वो आया 4 पाई। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज 70 इंटू 4 पाई। द आंसर इज 280 पाई न्यूटन मीटर। इट इज 280 पाई न्यूटन मीटर। जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। आज का दूसरा न्यूमेरिकल या दूसरा सवाल लेते हैं। क्या है? 8 kg व्हील, रेडियस ऑफ गायरेशन 1/4। 8 kg व्हील, रेडियस ऑफ गायरेशन 1/4 मीटर, रेडियस ऑफ गायरेशन 1/4 मीटर। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर 4 रैड्स पर सेकेंड स्क्वायर। 4 रैड्स पर सेक स्क्वायर, ये सही जा रहा है अभी। इट इज नॉट अ गूगली। टॉर्क इज इक्वल टू, पहले आई ढूंढ लेते हैं। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम इज 8 इंटू 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 1/16, दैट इज हाफ। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज हाफ इंटू 4। द आंसर इज 2 न्यूटन मीटर। द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन is 2 Newton meter, that is B, second option, that is B, second option। चलिए तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3 kg meter square। मोमेंट ऑफ इनर्शिया is 3 kg meter square, okay fine, is acted upon by a torque 60 Newton meter। torque is equal to 60 Newton meter। If the disk is at rest, then time required for angular velocity 90 rads per second। Omega 1 is equal to 0, t is equal to how much? Omega 2 will be 90 rads per second rather 1। So what it will be? It will be torque is equal to I into alpha, that is I into omega 2 minus omega 1 upon t। torque is equal to 60, I is equal to 3, omega 2 is 90 minus omega 1 is 0 upon t, t is equal to 3 into 90 upon 60, this is 1 za, this is 2 za, and my answer is 4.5 seconds। my answer is 4.5 seconds, 4.5 seconds। the answer is C, third option। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। Which is the fourth question now? Let me check।
I think, yeah, बड़ा interesting question है fourth. An automobile engine develops 60 pi kilowatt of power. Power is equal to 60 pi kilowatt यानी into 10 raised to the power 3. फिर क्या होता है? When it is rotating at a speed of 1800 rpm, frequency is 1800 upon 60, that is 30 rpm. Okay, no problem. Torque required will be how much? Power is equal to tau into omega 60 pi into 10 raised to 3 is equal to torque into 2 pi into n, that is 60. So this is going to get cancelled, and torque will be equal to 10 raised to the power 3 Newton meter. Torque will be equal to 10 raised to 3 Newton meter. Yeah, it's C, third option. It is C, third option. पांचवा सवाल, question number 5. A wheel of mass 40 kg, a wheel of mass 40 kg, फिर क्या होता है? Radius of gyration 0.5 meter, radius of gyration 0.5 meter, comes to rest from 180 rpm, comes to rest from 180 rpm. 180 rpm यानी 180 upon 60 frequency हो गया, उसको 2 pi से multiply करो, 1 जा 3 जा, आंसर आया 6 pi. Assuming in 3 seconds, okay, t is equal to 3 seconds, t is equal to 3 seconds, right? Okay. Assuming that the retardation is uniform, calculate the retarding torque. पहले I ढूंढ लेते, I is equal to mk square. This is m 40 into 1 by 0.5 का square, 40 into 0.25, 40 into 0.25 is 10. Yes, so moment of inertia आ गया 10 kg meter square. हमको क्या ढूंढना है? टॉर्क ढूंढना है ना? क्या ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 5 में? रिटार्डिंग टॉर्क. ओके, टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha, that is 10 into omega 2 minus omega 1 upon t, that is 10 into 0 minus 6 pi upon 3, this is 1 za 2 za minus 20 pi, minus sign is showing it is retarding, and its value is 20 pi. The correct answer is B, second option. The correct answer is B, second option. Sixth question. क्या है सवाल? A torque of 100 Newton meter acting on a wheel at rest. Torque 100 Newton meter acting on a wheel which is at rest. Rotates it through 200 radians. Theta is equal to 200 radians in 10 seconds. In 10 seconds, t is equal to 10 seconds. The angular acceleration of the wheel is how much? How much is the value of alpha? How much is the value of alpha? So, torque is equal to I into alpha. यहाँ से नहीं आएगा, torque सिर्फ दिया है. Torque is wheel as rest. ओके, तो यहाँ से ये नहीं निकलेगा. लेट अस चेक आउट और क्या कर सकते हैं. सो टाइम दिया हुआ है, सो आई राइट थीटा दिया हुआ है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर. दिस इज 200 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज 100. दिस इज गोइंग टू बी 50, and I get alpha as 4 rads per second square. Sixth question, it is 4 rads per second square, that is B is the correct option. सातवां सवाल, question number 7. A disc of mass 2 kg, a disc of mass 2 kg, diameter 40 centimeter यानी radius 20 centimeter, that is 0.2 meter, 0.2 meter, is free to rotate about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Disc है, okay. Moment of inertia
mr square by 2. A force of 50 Newton is applied tangentially. Okay, force of 50 Newton is applied tangentially. What will be its angular acceleration? What will be value of alpha? So torque is equal to I into alpha. I is equal to mr square upon 2 into alpha. Torque will be equal to product of force into moment arm, that is R, is equal to mr square upon 2 into alpha. Alpha will be equal to, ये कट हो जाएगा, 2 times F upon m into R. What is 2 times F? So it is 2 into 50 upon 2 into 0.2. This gets cancelled. It is 50 upon, it is 50 upon 0.2. The answer is 250 rads per second square. Option है क्या, देख लो भाई, 250 rads per second square. Yes, it's right. It's C, third option. It is C, third option. चलिए 7वें सवाल का रुख करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अरे यही तो 7th था, 8th है शायद. अभी ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां सवाल है. ओके, 8वां सवाल. A wheel of mass 40 kg, यहाँ जमेगा क्या? हाँ, wheel of mass 40 kg and radius of gyration 0.5 meter. Radius of gyration 0.5 meter comes to rest from 180 rpm. 180 rpm. 2 pi into 180 upon 60, that is 6 pi, comes to rest, यानी omega 2 will be equal to 0 in 30 seconds. टॉर्क ढूंढना है in 30 seconds. टॉर्क ढूंढना है. टॉर्क is equal to I into alpha. I is mk square into alpha will be omega 2 minus omega 1 upon t. 40 into 0.5 का स्क्वायर इंटू, ये माइनस आएगा, इंटू 6 pi माइनस अपॉन 30. लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू. इट इज 40 into 0.5 into 0.5 into 6 divided by 30. मेरा आंसर जो है इस सवाल का वो है 2 pi. 2 pi. कौन सा ऑप्शन है 2 pi? यस, द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. सवाल नंबर 8, उसका जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. 12 सवाल है शायद, और 4 बाकी है, तो उतनी जगह कर लेते हैं. चारों सवाल सॉल्व कर देंगे. अभी सभी न्यूमेरिकल्स थे, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन इट्स बेटर कि ब्लेंडेड प्रैक्टिस हो गई न्यूमेरिकल की. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है. क्या है क्वेश्चन नंबर 9? A motor running at a rate of 1000 rpm, 1000 rpm, omega 1 या omega will be equal to 2 pi into 1000 rpm upon 60. This is equal to 200 pi upon 6. रहने दो उसको. Motor running at this torque 60 Newton meter. Torque is equal to 60 Newton meter. Torque is equal to 60 Newton meter. क्या पूछा है उन्होंने? पावर डेवलप पूछा है. ओके, पावर विल बी इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, दैट इज 60 इंटू 200 pi upon 6. This is going to be 10. This is going to be 2000 pi और 2 pi किलोवाट. क्या दिया देखते? 2 pi kilowatt. Okay, fine. That's B, second option. That's B, second option. चलिए बात करते हैं 10वें सवाल की. क्वेश्चन नंबर 10. 1200 आरपीएम टॉर्क दिया है, पावर पूछा है. 1200 आरपीएम टॉर्क दिया है, पावर पूछा है. सिमिलर 1200 आरपीएम, 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये गया 40 पाई. 1200 आरपीएम. आगे क्या? टॉर्क दिया है 80,
टॉर्क दिया है 80, पावर पूछा है टॉर्क इंटू अल्फा, टॉर्क इंटू ओमेगा, 80 इंटू 40 पाई, it is 80 into 40 pi, that is 3200 pi watt or 3.2 pi kilowatt. 3.2 pi kilowatt होगा, यस होगा, जवाब होगा सी, थर्ड ऑप्शन। सवाल नंबर 11, a wheel of moment of inertia 2 into 10 raised to 3, 2 into 10 raised to the power 3 is rotating with omega is how much? 4 rads per sec, 4 rads per sec. So omega 1 उसको स्टॉप कराना है, omega 2 आएगा 0. Torque required to stop it in 1 second, t is equal to 1 second. So alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t, 0 minus 4 upon 1, minus 4 आया, torque is equal to I into alpha आया, I to 2 into 10 raised to 3 आया, into 4 आया, ये 8 into 10 raised to the power 3 न्यूटन मीटर, माइनस ऑफ कोर्स ये मेरा जवाब है, yes, 8 into 10 raised to the power 3, the answer is C, थर्ड ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12, starting from rest, a fan takes 5 seconds to attain, starting from rest, यानी ओमेगा 1 is equal to 0, 5 सेकेंड ले रहा है वो फैन, क्या हो रहा है 5 सेकेंड में? 400 आरपीएम, यानी ओमेगा 2 is equal to 2 pi into 400 upon 60, that is gone, it is 800 pi upon 6, that is omega 2. Assuming constant acceleration, the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. ओके, इससे अल्फा ढूंढ लेंगे बच्चों, अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, दैट इज 800 पाई अपॉन 6 अपॉन 5, दैट इज 800 पाई अपॉन 30, दिस गेट्स कैंसल्ड, 80 पाई अपॉन 3 इज अल्फा। हाफ द मैक्सिमम स्पीड जाने के लिए कितना समय लगेगा? हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना है गाइस? तो मैक्सिमम स्पीड है 800 अपॉन पाई, सो केस 2, हाफ द मैक्सिमम स्पीड, सो ओमेगा 2 डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, दैट इज 400 पाई अपॉन, या इसको ऐसे रखते हैं, दिस इज 800 पाई अपॉन 6 इंटू 2, ओमेगा 1 तो 0 ही है, अल्फा मैंने निकाला है 80 पाई अपॉन 3, समय कितना लगेगा? अल्फा इज ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी डैश, टी डैश विल बी इक्वल टू 800 पाई अपॉन 12, ये 0 हो गया, अल्फा नीचे आ गया, अपॉन 80 पाई अपॉन 3, दिस गेट्स कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल, दिस इज 1 जा 10 जा, 10 बाई 12 इंटू 3 बाई 1, दिस इज 1 जा 4 जा, मेरा आंसर आया 2.5 seconds, 2.5 seconds, the answer is B, second option, 2.5 seconds, the answer is B, second option। 12 सवाल थोड़े लंबे खींचे, लेकिन सभी न्यूमेरिकल्स थे और सेम टाइप के भी लिए, ताकि प्रैक्टिस हो। आशा करते हैं कि आपको इनमें किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं है। आज का काम यही रोक देते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स, एंड हैव अ ग्रेट डे।